Aquatic plants are of three types: floating plants, emergent plant, and submerged plant. Floating plants, these plants are spongy and filled with air. This makes them very tight and light and helps them float on water. फ्लोटिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है, जो पानी के ऊपर की तरफ तैर रहे होते हैं, उस तरीके के प्लांट्स आप देख सकते हो यहाँ पे। हम काफ़ी कुदरती नेचुरल जो जगह होती हैं, जैसे तालाब हैं, नदियाँ हैं, उनके आसपास इस तरीके के प्लांट्स देखने को मिलते हैं फ्लोटिंग। जैसे लोटस है, वो भी एक फ्लोटिंग प्लांट्स में गिन सकते हैं हम। तो यहाँ पे दिया गया, देयर आर नॉट फिक्सेड टू द फ्लोर ऑफ द वाटर बॉडीज बट दे हैव रूट्स दैट ऑब्जॉर्व वाटर्स। जो उनकी जड़ें होती हैं वो पानी को ऑब्जॉर्व करती हैं। द लीव्स आर फिल्म एंड फ्लोट टू ऑब्जॉर्व मोर सनलाइट। उन्हें सनलाइट से वो डेवलप होते हैं, ग्रोथ करते हैं। डेंस ग्रोथ ऑफ फ्लोटिंग वाटर प्लांट्स कैन प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग अदर प्लांट्स, so other plants may die of starvation as they would not be able to make food without sunlight. बिना sunlight के उन्हें food नहीं provide होता। And this can also causes the death of many aquatic animals, so these plants should be removed if they exist in excess in any water bodies. Water hyacinth is largest floating plant. Its leaves are smooth and round. Its leaf stalk contain air inside, which help the plant to float. Water hyacinth has light purple flowers which grow in bunches. वाटर हाइचिंथ इज अ लार्जेस्ट फ्लोटिंग प्लांट है। वो जो ये यहाँ पे दिया गया है, ये मतलब बहुत अच्छा प्लांट है पानी का। एंड स्टॉक इट्स लीव्स स्मूथ एंड राउंड। उसकी जो लीव्स है, पत्ते हैं, वो स्मूथ हैं और राउंड शेप में। इट्स लीव स्टॉक्स कंटेन एयर इनसाइड विच हेल्प्स द प्लांट टू फ्लोट। Water hyacinth has lift purple flowers which grow in bunches. Water lettuce pistia can from large invasive floating colonies. Its flowers are yellow and its leaves grow as roasted. Water lettuce is a free floating plant with spongy leaves. It can from think floating mats that covers the pond surface. Duckwood Wolofia is a tiny plant. It has a float disc shaped leaves and sunlight root and little white flowers. What moves fern has a small hairy boat shaped leaves which trap air. This makes them waterproof. Roots of water moose fan dangle in waters. Okay. Chapter 19, Properties of Water. Warm up. Imagine that there would be no water supply in your localities for the next 2 days. Mention some difficulties you would face. Would you try to save water for Thursday 2 days? If yes, how? Water is precious because it is one of the reasons that life exists on the earth. ये तो पता ही है कि लाइफ में सबसे ज़्यादा पानी इंपॉर्टेंट है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, ब्रीथिंग एंड इरिटिंग फील्ड्स। खेतों में पानी लगाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े वॉश करने के लिए एंड नहाने के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। वाटर इज़ ऑल्सो यूजेड इट फैक्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज में भी इनका इस्तेमाल होता है। और उसके फॉर्म्स हैं लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Properties of water. Water is naturally found in 3 forms on the earth: solid, ice, liquid and gas. Water vapor. Pure water is colorless or odorless and translates. Okay. Measuring water. We measuring water in terms of its volume in liter and milliliters. Volume refer to the amount of space that any solid, liquid or gas occupies. Different types of beakers are used to measure the volume of liquid.
water, the universal solvent. Solution is formed when two or more substances mix together such as that they are evenly distributed. Water is called the universal solvent because it can dissolve most solid, liquid and gases. The substance that dissolves is called the solute. The substance in the which the solute dissolve is called the solvent, and a solid and solvent together form a solutions. Things dissolve faster if the water is stirred or heated. There are two kinds of substance, soluble and insoluble. Soluble substances are the substances that dissolve completely in a solvent to a form of a solutions. From example, salt and sugar is soluble in water. ये पानी में घुल जाते हैं और पता भी नहीं पड़ती है. The abilities of a substance is to dissolve in a liquid is a quality it's called solubility. Insolubility substance and chalk are insoluble in water. chalk है and sand है, वो नहीं घुलते हैं, नीचे बैठ जाते हैं वो. When two liquid mix together such as example milk and ink dissolve completely in water. When two liquid mix together such that they do not dissolve completely in each other, they are called immiscibly liquid. For example, when oil is mixed in water, it forms a layer on the top of water surface. यहाँ पे आप देख सकते हो ऑयल, वाटर एंड शुगर सॉल्यूशंस. ऑयल है जो ऊपर पानी के ऊपर की तरफ तैर रहा है और शुगर है जो पानी में मेल्ट हो चुकी है. सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल्स. सम मटेरियल्स फ्लोट ऑन वाटर. कुछ मटेरियल्स होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, फ्लोट करते हैं. वेयर इज सम मटेरियल सिंक. Whether a material floats or sinks depend on the property called density. Density is defined as mass per unit volume of a material. Material which is less dense than water will float on it. A material which is more dense than water sinks in it. Wood and oil float on a water. A coin and a stone sink in water. Hot water freezes faster than cold water. This is known as the Mapilba effect. ओके, तो ये यहाँ पे फिनिश होता है.